Namaskar everyone, welcome to Headlines of the Day. In this video, we will discuss major headlines of the Hindu. And before we start, I would say it is a rough road that leads to the heights of greatness. तो चलिए फिर इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट खबरों पे नजर डालते हैं. आज की हमारी पहली हेडलाइन है इंडिया एंड चाइना टू कीप डायलॉग चैनल्स ओपन. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 1 और ये रिलेटेड है पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो आउटकम्स ऑफ इंडिया एंड चाइना 17th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल talks. So friends, they agreed to continue a dialogue through military and diplomatic channels and work out a mutually acceptable resolution of the remaining issues at the earliest. Right? Our next important headline is Kerala government publishes map for people to seek exemption from ESZ. It is available on page number 7 और ये related paper 3 environment section से. In this article we have to know what are eco-sensitive zones and their purpose, significance, challenges and way ahead. तो दोस्तों इससे related content हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. उसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप यहां से भी देख सकते हैं. अगर हम ओवरव्यू देखें तो इको सेंसिटिव जोन्स आर क्रिएटेड एज अ शॉक ऑब्जर्वर्स फॉर द प्रोटेक्टेड एरियाज टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस नियर बाय. ठीक. आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज रीशेपिंग द वर्ल्ड्स रिस्पांस टू द टेरर मैट्रिक्स. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 8 और ये रिलेटेड है पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाई डज टेररिज्म रिमेन omnipresent, what are the threats associated with it, various initiatives across the globe and India, and what more steps need to be taken in this context. तो दोस्तों इसको भी हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है एंड लिंक यू नो कि कहां मिलेगा. उसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप यहां से भी देख लीजिएगा. ठीक. आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज इन यूएस एक्शंस द वरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 8 और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो इंपैक्ट्स ऑफ टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम imposed by United States and World Trade Organization law in this context, key analysis and way ahead. दोस्तों ये सारे पॉइंट्स लाइन बाय लाइन यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर्ड हैं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा. ठीक. आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज शुड द कोर्ट्स क्लोज फॉर वेकेशन. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 9 और ये रिलेटेड पेपर 2 जुडिशरी सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाई डू कोर्ट्स गो ऑन वेकेशन एंड व्हाई कांट दे फंक्शन लाइक एवरी अदर आर्म ऑफ आवर डेमोक्रेसी and work all year round, and what happens to the pending cases during vacations. In this article it has been highlighted that India has the most overburdened judiciary and if we don't have vacations judges will break down, therefore judges require vacations for rest. ठीक. बाकी अदर पॉइंट्स के लिए यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल. आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज द अनकंट्रोल्ड री-एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट्स. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 10 और ये रिलेटेड है पेपर 3 स्पेस सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ रॉकेट लॉन्च एंड व्हाट इज एन अनकंट्रोल्ड री-एंट्री एंड व्हाई आर साइंटिस्ट्स वरीड अबाउट द री-एंट्रीज. तो फ्रेंड्स रॉकेट्स हैव मल्टीपल स्टेजेस एंड वंस अ स्टेज हैज इंक्रीज्ड द रॉकेट्स altitude and velocity by certain amounts, the rocket sheds it, and in an uncontrolled re-entry the rocket stage simply falls and its path down is determined by its shape, angle of descent, air currents and other characteristics, and it will also disintegrate as it falls. One more thing friends, there is no international binding agreement to ensure rocket stages always perform control re-entries nor on the technologies with which to do so, and Liability Convention 1972 requires countries to pay for damages, not prevent them. ठीक. Our next important headline is what do the Jammu and Kashmir land grants rules 2022 entail. It is available on page number 10 और ये related है paper 2 polity and governance से. In this article we have to know what do new land laws entail and how will new rules impact the current land owners in Jammu and Kashmir. So friends, Jammu and Kashmir government has notified land grants rule 2022 and according to the new land rules the leases of current land owners will not be extended in case of their lease expiry. ठीक. बाकी अदर पॉइंट्स के लिए you can go through this article. Our next important headline is Afghan women's rights are at risk under the Taliban regime. It is available on page number 11 और ये related है paper 2 international relations से. In this article we have to know about the Taliban government's recent move to ban women from private and public universities, its repercussions, response of India and way ahead. तो दोस्तों recently Taliban banned women from private and public universities in Afghanistan with immediate effect and until further notice, and India expressed concern and it reminded the Taliban about UN Security Council resolution 2593 that had called for upholding of women's rights in Afghanistan. ठीक. Our next important headline is bill seeks to promote ease of doing business. It is available on page number 12 और ये related है paper 3 economy section से. In this article we have to know what are the key features and objectives of Jan Vishwas bill. So friends, the bill will amend certain enactments
for decriminalizing minor offenses to enhance trust-based governance for ease of doing business. ठीक. Our next important headline is Sahitya Academy Awards announced Anuradha Roy among 23 winners. It is available on page number 14 और ये related है miscellaneous section से. In this article we have to know about Sahitya Academy Awards for 2022. दोस्तों Sahitya Academy Awards prizes to the most outstanding books of literary merit published in any of the major Indian languages recognized by the Academy. ठीक. Our next and last important headline is Need Taxonomy Definitions to Avoid Greenwashing Rao. It is available on page number 16 और ये related है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से और पेपर 3 एनवायरमेंट से भी इसको लिंक कर सकते हैं. In this article we have to know about green financing and green washing. Recently Reserve Bank Deputy Governor called for a taxonomy on green finance to avoid the risk of green washing. Now what is the meaning of green financing? It refers to lending to environmentally sustainable economic activities, and greenwashing refers to misleading and exaggerated claims to deceive people about the environmental worthiness of a product or action. ठीक. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. For regular updates you can follow us on various social media platforms.